भक्ति। जब भक्ति शब्द की बात आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मन में एक भाव को अगर कहें तो भक्ति कहा जा सकता है। भक्ति कब पैदा होती है और भक्ति की ज़रूरत इंसान को कब पड़ती है? सामान्यतः कहा जाता है कि इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तब वह भगवान की शरण में जाता है। अनेक साहित्यकारों ने भक्ति की जो है अनेक परिभाषाएं दी हैं और भक्ति के ऊपर बहुत से शोध कार्य हो चुके हैं, बहुत सा लेखन हो चुका है। और जब भक्ति के भाव की बात आती है तो उसके साथ श्रद्धा और प्रेम ऐसे ही जुड़े रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है, जिसे आध्यात्मिक रूप से आज भी पूरे विश्व का गुरु माना जाता है, तो यह भारत जो देश है, यह संतों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक संत हुए जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया और आज भी जो है आध्यात्मिकता हमारे देश के, जिसे हम कहेंगे, जर्रे जर्रे में बसी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति के परिचय पे, कि भक्ति का परिचय किस तरीके से दिया जाए, किस तरीके की जो है भक्ति को सार्थक भक्ति कहा जाए और किस तरीके की जो है भक्ति जो है वह त्याज्य होनी चाहिए। और यहाँ पर मनुष्य का जब जन्म होता है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है वही जीवन होता है। और जन्म मरण के चक्र से अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त होने के लिए, जिसे हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तरह तरह की जो वेदों में, जिसे हम कहेंगे उपनिषदों में और महाकाव्यों में विभिन्न प्रकार से लिखा गया है। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी का जो समय है उसे जो है भक्ति काल कहा जाता है, कि वह जो समय है वह भक्ति का समय रहा है। आदिकाल, मध्यकाल से रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें सब जो मूल जो दूसरा आदिकाल के बाद का जो समय है उसे जो है भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है आज हम उसी भक्ति काल का जो है परिचय भी देंगे, साथ साथ में वास्तव में भक्ति होती क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भक्ति जो है सबसे पहले भक्ति के अंदर कौन सा तत्व होना सबसे ज़्यादा जरूरी है? अगर सामान्य रूप से भी, अगर हम सामान्य जीवन में भी अगर हम देखें तो हम किसके भक्त बनते हैं, किसके प्रति हमारे हृदय से प्रेम उमड़ उमड़ के आता है और जो है हमें भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और आस्तिक और नास्तिक आखिर होते क्या हैं, और आस्तिकता और नास्तिकता के मध्य में किस प्रकार से भक्ति उनसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, भक्ति में प्रेम का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना कहते हैं कि मुक्ति नहीं। कबीर, दादू पलटू, नानक, कबीर, कितने ही संत हैं जिन्होंने भक्ति को अपने अपने नजरिए से देखा है। तो सबसे पहले जब भक्ति की बात आती है तो यहाँ पे भगवान, आखिर भगवान क्या होता है, भगवान होता भी है या नहीं होता है, अनेक तरह के जो इसके ऊपर शोध कार्य हो चुके हैं। अगर पूछा जाए, अगर श्रोताओं से या किसी से भी अगर हम पूछें तो क्या वास्तव में भगवान होता है? अगर होता है तो क्या किसी ने उसे देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आखिर क्यों मानते हैं कि भगवान होता है? और अगर वह दिखाई नहीं देता, जिसे बांधा नहीं जा सकता, तो क्यों ऐसा होता है कि हम अनुभव करते हैं, किसी ताकत को जो है अनुभव किया जाता है। एक जिसे हम कहेंगे कि संचार जो है मन में या भाव में कोई ऐसा कुछ होता है जिसके कारण हम उस परमपिता परमात्मा को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे जो संत हैं उन्होंने इन्हें किस प्रकार से जो है रखा है, यानी कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट भक्ति, ये परमात्मा, कोई ताकत, कोई शक्ति जिसके ऊपर पूरी सृष्टि जो है वह टिकी हुई है। तरह तरह के जो है चमत्कारों का वर्णन है, तरह तरह की अनुभूतियों का वर्णन है, यानी कि परमात्मा कण कण में मौजूद है। वह सगुण है और निर्गुण। यहाँ पे आज हम दोनों ही प्रकार की भक्ति की चर्चा करेंगे। और ये सगुण क्या होता है? सगुण
और निर्गुण क्या होता है? अगर वह कण कण में मौजूद है, कबीर और तुलसी, कबीर के राम अलग हैं और तुलसी के राम अलग हैं। यहाँ पर जो है कबीर का राम जो है वह कण कण में पाया जाता है, और तुलसी का राम जो है वह दशरथ घर, वह दशरथ के घर में उसने जन्म लिया है। यानी कि वह क्या कर रहा है, उसने अवतरण लिया है। और परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति को कबीर जो है वह किस प्रकार से बताते हैं। आखड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। कि मेरी जीभ में तो जो है छाले पड़ गए हैं राम पुकार पुकार के। और आंखें क्या है, आंखें छाई पड़ी, आंखें जो है वह बिछाई हुई है मैंने अपनी। और देखिए क्या है कि रास्ता निहार निहार के जो आंखें हैं वह थक चुकी हैं। दशरथ के घर में जो जन्म लेने वाला जो राम है और जो निर्गुण राम है, दोनों ही यहाँ पर एक परब्रह्म यानी कि परमात्मा के प्रतीक है। अगर देखा जाए तो इंसान जब पूजा अर्चना जब करता है और जब वह जिसे हम कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होई। अगर इंसान उस परमपिता परमात्मा को क्या है सुख में याद करे तो दुख होगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामान्य जो मानव का जो स्वभाव है वह क्या है कि दुख आता है तब हम भगवान भगवान पुकारते हैं। तो यहाँ का जो कबीर के में जो ने जिस राम का या जिस पर ब्रह्म का वर्णन किया है, उनकी जो भक्ति है वह निर्गुण की भक्ति है कि वह दिखाई नहीं देता है, वह कण कण में मौजूद है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चलो हमारे साथ। क्या कहते हैं कबीर कि ये तो खाला का घर नहीं है, आसान रास्ता नहीं है, सूरमाओं का काम है। इस रास्ते पर चलने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को अभिव्यक्त करना पड़ता है। अपनी ही कमजोरियों से निजात पानी होती है, झांकना होता है अपने ही अंतर मन में और स्पष्ट कर देनी होती हैं वो चीजें। कितना आसान होता अगर इतना ही सरल होता तो आज जो है इस तरीके से जो है हम संतों को याद नहीं कर रहे होते। कबीर किस समय हुए और आज हम उनको वर्णित कर रहे हैं, आज हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। उनकी भक्ति की जो उनकी जो भक्त का जो उनका जो भाव था परमात्मा के प्रति, जो एक उच्च जिसे हम कहेंगे कि चेतना का जो सबसे उच्चतम स्तर जो होता है वह होता है भक्ति। भक्ति कोई आसान जिसे हम कहेंगे किताबी बात नहीं है। भक्ति एक अनुभूति का विषय है जिससे जो प्रेम से लबालब है, जिसमें श्रद्धा से आंखें झुक जाती हैं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पंडित कोई। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, यानी कि जो ढाई अक्षर जिसने प्रेम को समझ लिया, प्रेम के मर्म को जिसने जान लिया, वही वास्तव में क्या है वही वास्तव में विजेता है। वही वास्तव में जिससे हम कहेंगे कि वही भक्ति के स्वरूप को जान लिया, उसी ने जान लिया है। भक्ति के लिए पढ़ाई लिखाई की, तर्क वितर्क की या कहेंगे कि तर्क कुतर्क की जरूरत नहीं होती है। भक्ति शुद्ध सात्विकता को अपने आप में स्वयं समाहित किए हुए होती है। भक्ति एक ऐसा भाव है जो सिर्फ अनुभूति का विषय है। और कबीर ने जिस भक्ति का वर्णन किया है कि क्या कहते हैं कबीर, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अरे इसमें जात पात का कोई खेल नहीं है। यहाँ तो जो है ये तो खुला रास्ता है सबके लिए। यहाँ पर जाति पाति नहीं पूछी जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के अंतर मन की भावना को देखा जाता है। और आगे क्या लिखते हैं, ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योति, त्यों घट घट रमई ओत पोती। यानी कि ये तो घट के अंदर का खेल निराला है। जो भक्ति जो इंसान करता है, क्या कहते हैं कि जब अंतर मन में जब जाता है तो घट का खेल निराला है। वही सूरमा बता सकता है जिसने
क्या है, भक्ति की है, जिसने नाम का सुमरण किया है, जिसने उस परम पिता परमात्मा के नाम को जो है याद किया है पल पल में, और क्या कहते हैं कि खाली सांस न जाई। अगर इंसान अपना भला चाहता है, अगर इंसान को लगता है कि यह इस जीवन में अगर उसे परमात्मा ने यह जब जन्म दिया है तो उसे क्या है, जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, जो सबसे ज्यादा हमारे काम आने वाली चीज है, जिस उसे हम दुनिया की माया के चक्कर में या दुनिया के जो भारी आवरण है और भौतिकता की चकाचौंध में, और जो है हम उन मूल चीज को हम भूले हुए जो है फिर रहे हैं। तो कबीर क्या कह रहे हैं, कबीर ने यही कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी। माया जो है वह क्या है, वह महा ठगनी है। माया जो है वह हमें प्रभु से दूर कर रही है। और ये जो किताब है ना, जो थोथा जो ज्ञान है, जिसे कहा है कबीर ने, क्या कहा कि किताबों का ज्ञान थोथा है, थोथड़िया एकदम थोथा ज्ञान है। जो थोथे ज्ञान को है हमने कुछ खाया और उसके बाद क्या है, उसे उलट दिया। इसी प्रकार से जो हमने ग्रंथों से जो ज्ञान जो हमने पाया है, जो किताबों को पढ़कर हमने पाया है, वह कौन सा ज्ञान है, वह ज्ञान थोथा है। और ज्ञान सब थोथा, यानी कि जो सच्चा जो ज्ञान है वह क्या है, उस पर ब्रह्म को भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेना, उनके नाम का सुमरण करके, और जिसे आत्मसात करके एक जो मुक्ति का जिसे हम कहते हैं रास्ता है, वही वास्तव में वही सत्य है। और सत्य के करीब जाने के लिए इंसान को खांडे की धार पर चलना पड़ता है। इतना आसान कहाँ है भक्ति का मार्ग। अगर इतना आसान होता तो हम देखिए कि जो कितने भी जितने संत हुए हैं, चाहे उसमें दादू साहब रहे हों, पलटू हो, और गुरु नानक जी रहे हों, चाहे इसमें जब हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं तो कबीर हो, तो सभी ने जो जीवन जिया, उस जीवन में जो है किस प्रकार से लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यानी कि लोगों को किस चीज से समस्या है, सांसारिक, या जिसे कहेंगे कि उनकी अच्छाई से। संत तो अच्छे हैं, वो तो भला कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उनको प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। और प्रताड़ना देने वाले कौन लोग हैं? प्रताड़ना देने वाले लोग भी जो हैं वह ऐसे नहीं है कि धर्म कर्म को मानने वाले नहीं है, या फिर वो कोई दूसरे तरीके के लोग हैं, वो भी सामान्य लोग हैं, लेकिन फिर भी संतों को यातनाएं दी गई हैं। इसके पीछे जो है क्या कारण है? यानी कि समस्या जो है वह किससे है? वह समस्या अच्छाई से है। यहाँ पर इंसान क्या है, सहज रास्ता अपनाना चाहता है, और सहज, और जो चीज सहजता से मिल जाती है, आज सहजता की तरफ जब हम जाएंगे तो वहां पे हमें आसानी से मिलने वाली चीजें आसानी से चली भी जाती हैं। उसके लिए अगर हमें दुर्गम दिखने में जो सरल है, और जो है दिखने में सरल है, वही अपनाने में बड़ा कठिन है। और वह सबको पता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और उससे जो है सकारात्मकता आती है, लेकिन कितना इंसान करता है। दूसरी तरफ उसके बाद जो है कबीर ने जो है परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया है आखिर। जब इंसान भक्ति की तरफ चलता है तो उसके लिए क्या है, गुरु 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 गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदिया मिलाए। यानी गुरु के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर गुरु आखिर गुरु कौन से गुरु की यहाँ पर बात कर रहे हैं कबीर जी? कबीर कहते हैं कि अगर आप भक्ति के रास्ते पर हो और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूप से जो है वह आपको किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के बिना जो है भक्ति हो ही नहीं सकती है। अगर मीराबाई की बात करते हैं तो मीराबाई ने जो है वो किसे गुरु बनाया? उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु बनाया। भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद। भक्ति कहाँ से आई? कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इतिहास में क्या कहा गया है कि जब 14वीं शताब्दी से जो पहले का जो समय था वह युद्धों का समय था, चारों तरफ अशांति फैली हुई थी, लोग हारे हुए थे, और हारे का हरिनाम, यानी कि हारने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें भक्ति की तरफ जाना चाहिए। परमात्मा को एक ऐसी जगह के रूप में निर्मित किया कि वहां पर जाकर आप अपने सारे दुखों को रख सकते हो, वहां पर अपने सारे दुखों को आप उड़ेल सकते हो, आराम से परमात्मा के सामने बैठ के रो सकते हो।
कहने का मतलब क्या है, यहीं पर कबीर जो है वह मूर्ति से नजर आते हैं। कबीर ने क्या कहा, कहते हैं सफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान ध्यान मोको गुरु दीना, राम नाम बिना जीवन होना। यहाँ पर क्या है, एक जो भाव है वह जो व्यक्त किया है वह क्या है कि गुरु कितना जरूरी है। अर्थात क्या है, मेरे जन्म को गुरु ने सफल बनाया है, मेरे दुखों को दूर कर मेरे हृदय में सुख भर दिया है, मेरे गुरु ने मुझे राम रूपी ज्ञान दिया है, राम नाम के बिना मेरा जीवन तुच्छ है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो दूसरी भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी भाषाओं में भी क्या है, सिंधी भाषा के कवि हैं शाह लतीफा, वे क्या लिखते हैं, मुझे गुरु ने गदुड़ी दी है, वह मेरे लिए अमूल्य निधि है, वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है। कहने का मतलब क्या है कि जो निर्गुण के भक्ति है उसमें किस प्रकार से गुरु की महत्ता को जो है वह बताया गया है। दूसरा क्या है, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। यही है कि अभी जो मैंने कहा कि एक प्रकार से ज्ञान उलट लेना, आप उसे पढ़ लीजिए, अध्ययन कीजिए और उसके सामने फिर है उसको रखिए, आप प्रचार प्रसार कीजिए उसका, वह क्या है, खाया हुआ ज्ञान जो है वह उलटना है। वास्तव में जो ज्ञान है वह क्या है, वह अनुभूति का विषय है और अनुभव करके ही उसे जाना जा सकता है। उसके बाद जो है उन्होंने क्या है, नाम की महिमा, आखिर ये नाम होता क्या है और नाम सुमरण भजन भक्ति ये सब कौन सी चीजें होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी और ये क्यों जरूरी है। तो कबीर ने क्या लिखा है, गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ जानत नाही, अंदर अंदर राम बाहर राम, जहां देखो वहां पूरन काम, जागत राम सोवत राम, सपने देखे राजा राम, एका जनार्दनी अनुभव निका, जहां देखो वहां राम सरीखा। और इसी प्रकार से गुजरात के जो कवि नरसिंह मेहता हैं उन्होंने क्या लिखा है, हरि हरि रटन कर कठन कलिक कौमा, दान बेसे नहीं काम सरसे, भक्त अधीन छे श्याम सुंदर सदा, ते तारा कारज सिद्धे करे। अर्थात इस कठिन कली काल में हरि हरि रटो, इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता और क्या है, और काम भी सिद्ध हो जाएगा। यानी कि भगवान की जो आवश्यकता को जो है सिर्फ हिंदी के कवियों ने नहीं, गुजराती मराठी सभी जो है कवि, इस कवियों ने भक्ति काल के बारे में लिखा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि अगर तुलसीदास की अगर हम बात करें, तू अन्या कोण ने कोने वलेगी रहो, वगर समरजे कहे मारू मारू, हु करू मैं क्यों मिथ्या बके, सकर नो भार जयन शवांता ने। अर्थात तू कौन है जो शुद्ध बुद्ध चेतन होने पर भी बिना समझे बूझे मेरा मेरा कर रहा है, और यह कार्य मैं ही कर सकता हूँ, अमुक कार्य मैंने ही किया है। इस प्रकार झूठी बकबक, जैसे गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता गाड़ी का सारा भार अपने ऊपर समझता है। कन्नड़ कवि पुरंदरदास की कविता में अहंकार के त्याग का भाव दूसरे रूप में आया है। वे कहते हैं कि हम सांसारिक कर्मों में लगे रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया है वह क्या कहते हैं कबीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। वो क्या है, चढ़ा सिंहासन पे, और दूसरा क्या है, एक चढ़ा सिंहासन पे एक बंधा जंजीर। यानी कि आज जो आया है वह निश्चित रूप से जाएगा, और अगर उसने जो सांसारिक जो उसकी कामनाएं हैं वो उनको जकड़े हुए हैं, और सांसारिक कामनाओं में जकड़े होने के कारण इंसान क्या भूल जाता है, वह मृत्यु को भूल जाता है। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे मेरा लाख टका है मोल। हीरा कभी अपनी अभिव्यक्ति करता है? नहीं, वह नहीं बताता है कि मेरी कीमत इतनी है। इसी प्रकार से अगर जीवन की विडंबना को, जीवन वास्तव में है क्या, यह भक्ति से ही समझा जा सकता है। जीवन एक अमूल्य निधि है जिसकी महत्ता को भक्त कवियों ने अपने अपने समय में अपने अपने दोहों और के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कबीर जैसा जो है
खंडन मंडन, यानी कि जो गलत चीजें हैं। क्या है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे क्या है, उससे तो चक्की भली है कि कम से कम पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता। मूर्ति पूजा का घोर जो है खंडन किया है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो क्या है, मैं तो पहाड़ों को पूजने लग जाता। और जो है और इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल में रहने से भी अगर परमात्मा मिलता, गंगा स्नान करने से या फिर जो नदी में गोता लगाने से अगर भगवान मिलता तो क्या मैं मछली और जो जल में रहने वाले जीव प्राणी हैं उनको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यानी कि जो सामान्य जो लोगों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका खंडन जो है कबीरदास ने किया है। पाथर कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या वह परमात्मा बहरा है? यानी कि हर जो है गलत रूढ़ी का विरोध जो है वह कबीरदास जी ने किया है। यहाँ पर जो है भक्ति के हम निर्गुण रूप की जो है अगर निर्गुण रूप की हमने चर्चा की है, और निर्गुण रूप की अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो ये क्या है, निर्गुण निराकार। ये जो है कौन से भगवान में विश्वास रखते हैं, दिखाई नहीं देता लेकिन कण कण में है। लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, यानी कि दिखने में तो वह लौकिक है कि जैसे कृष्ण राधा का प्रेम है, और दिखने से तो वह क्या है कि लौकिक प्रेम है कि एक पुरुष है एक स्त्री है, वे आपस में प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रेम का भाव है वह अलौकिक है। क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, नामदेव जी ने क्या लिखा है, किसु हूँ पूजू दूजा नजर ने आई, एक के पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धरिए पाओ। जय वो देव तो हम वो देव, कहे नामदेव हम हरि के शिव। कि भाई हम तो हरि के सेवक हैं। कहे मैं दासों का दास भगत मेरे मुकुटमणि, यानी कि मैं तो क्या हूँ, दासों का भी दास हूँ, और भगत क्या है, भक्त लोग जो है वो मेरे मुकुटमणि है। परमात्मा जो है वह अपने भक्तों की जो बंदगी है, भक्तों के कारण ही तो परमात्मा जो है उसका महत्व है, भक्ति के कारण ही ये सारी चीजें जो हैं वह स्पष्ट रूप से जो है समझी भी जा सकती हैं, और भक्ति के रूप से ही भक्ति के किस तरीके से भक्ति की जा रही है इसी के ऊपर जो है वह मानव जीवन टिका हुआ है। अगर हम दूसरे के सूफी कवि जो क्या कहते हैं कि भक्ति और प्रेम दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, वहां पे वाद विवाद नहीं है, वहां पे कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है, वहां पे झगड़ा नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ भाव है। जहां पे सोचा नहीं जाता है वहां पे तो महसूस किया जाता है, और जब भक्ति को इस तरीके से महसूस जब किया जाता है तब क्या क्या लिखते हैं, मैं आम पर शिकती हूँ, पकती हूँ, तड़पती हूँ और खोजती हूँ, मेरे अंदर प्रियतम की प्यास है जो कभी बुझती नहीं, सारा समुंदर भी पी जाऊं तो वह एक आचमन ही होगा। यानी कि परमात्मा से मिलन की, विरह की जब तड़प लगती है तो भक्त किस प्रकार से अपनी भावनाओं को जो है वह वर्णित करता है। और यहाँ पर धार्मिक रूढ़ी, यानी कि धर्म के नाम पर जो रूढ़ियां बनाई गई हैं उनका भी जो है भक्ति काल में घोर विरोध किया गया है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है झूठे आडंबरों को, झूठी परंपराओं को धर्म के नाम पर अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से जो है अगर हम संतों की भी बात करते हैं, अगर उसकी तुलना अगर हम आधुनिक युग से अगर करें, इसकी प्रासंगिकता की अगर हम भक्ति की बात करें तो भक्ति के नाम पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास, दूसरा किसे कहेंगे हम ठगी, जगह जगह पर लोग भक्ति के नाम पर जो है ठगते हुए नजर आते हैं। बहुत से ऐसे केसेस जो हैं, जैसे अगर हम नाम भी लेंगे तो भी उसको जो है देखा जा सकता है, चाहे उसमें अभी जो पीछे एक कई जो हैं उसमें ऐसे इस प्रकार के जो देखे जा सकते हैं
केसेस जो होते हैं कि भक्ति के नाम पर किस प्रकार की लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। अभी पीछे जो एक बुराड़ी में एक केस हुआ था जिसमें पूरा परिवार ने जो है वह अपने आप को किस तरीके से धार्मिक रूढ़ियों में जकड़ के पूरा परिवार ने अपने को खुदकुशी की थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो धार्मिक जिसे कहेंगे हम अंधविश्वास के ऊपर अंधविश्वास के कारण जो है वह समाज में आज भी देखी जा सकती हैं। तो उन रूढ़ियों का विरोध जो है उसी समय कबीर साहब और भक्ति काल के जो कवि हैं उन्होंने किया है। ऐसा भेद बिचुवन भारी, वेद फतेब दीन अरु दुनिया, कौन पुरुषी कौन नारी, एक बूंद एक मलमूत्र, एक वाम एक गुदा, एक ज्योति है ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन शुदा। यानी कि जात ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी कि क्या कौन सी जाति पाति को हमने जो बनाया है, किस प्रकार से इंसान ने जो है इस मानव ने किस प्रकार से अपने आप को जाति पाति में जकड़ लिया है। इंसान तो इंसान है, वह जब पैदा होता है क्या कहते हैं कबीर, एक ही रास्ते से तू ओन बाट तो आए, उसी रास्ते से तो तुम आए हो जिस रास्ते से हम आए हैं, तो तुम कैसे ब्राह्मण हो गए और हम कैसे शूद्र हो गए। कबीर ने क्या किया, कबीर ने कहा कि जब कहा जाता है कि जो जहाँ पे कबीर का जन्म हुआ तो कहते हैं कि अगर वहाँ पे जो है मृत्यु होती है तो सीधा स्वर्ग को जाते हैं। तो कबीर ने क्या किया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, और अपने कहा जाता है कि अपने जो अपना उनका जब उन्हें लगा कि जो उनका समय जो आने वाला है तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ पे कहते कि क्या फायदा फिर मेरी भक्ति का, अगर मुझे मैं यहीं रह के अगर मुझे यहाँ मुक्ति मिल रही है तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, और फिर मैं देखता हूँ अगर मुझे कैसी मेरी मुक्ति नहीं होती है। क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार, काफिर पत्थर जोड़ के कांकर पस वही कि कंकड़ और पत्थरों को जोड़ के तुमने मस्जिद तो बना ली है, तो मूला जो ताचड़ी मूला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या तुम्हारा भगवान बहरा हो गया है कि तुम उसे चीख चीख के पुकार रहे हो। दूसरी तरफ जो है एक तरह कबीर कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। अरे बकरी तो पत्तियां खाती है और तो तुम उसे किस तरीके से क्या करके काट काट के उसको तुम खाते हो। अरे उसने तो पत्तियां खाई हैं, अगर उसके खाने से कि बकरी के जो कंद मूल की जो पत्तियां हैं उसका खाने से, वो खाने से बकरी का ये हस्र है, तो तुम जिसे खा रहे हो उससे तुम्हारा क्या हस्र होगा। कहने का मतलब क्या है कि जाति पाति का और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन उन्होंने किया है कि न हिंदू है न मुसलमान है, हम तो क्या है उस प्रभु की संतान है। और जब उस परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है, एक रूप में उसे भेजा है हम लोगों को, तो हम कौन सी जो है हिंदू, तुम हिंदू मैं मुसलमान, और उनके जो उसके आधार पे तुम क्या क्या कर रहे हो। कबीर ने उस समय इस चीज का विरोध किया और आज भी हम समाज में इन बुराइयों को देख सकते हैं। कोई बोले राम कोई खुदाई, कोई सेबे गुसिया कोई अल्लाही, कारण करण करीम कृपा धरी रहीम, कोई नावे तीर्थी कोई हज जाई, कोई कर पूजा कोई सिरु निवाई, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई कहे तुर्कू कोई कहे हिंदू, कोई बाछे बिसूती सिर गिंदू, कहू नानक अर्जुन देव जिनी हुक्म पछाना, प्रेम साहिब की तीनी भेद जाना। कि जिसने प्रेम के भाव को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है। और उसके बाद जो है रहस्यवाद का वर्णन है, भक्ति के जो है इसमें मर्यादा पुष्टि हो, प्रवाह पुष्टि हो, पुष्टि सृष्टि हो, शुद्धि पुष्टि, यानी कि भक्ति के जो रूप है वह आगे जाके अभी निर्गुण के बाद सगुण, और सगुण के में भी प्रेमाश्री शाखा, और जिस प्रेम राम की जिस भक्ति है, और अलग अलग प्रदेशों के जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की में भी भक्ति को वर्णित किया है उसी रूप में। और भक्ति का जो
परिचय में अगर बात करेंगे तो हमने जो है सामान्य सा जो जिसे कह सकते हैं कि सामान्य परिचय में भक्ति को हमें इसी पृष्ठभूमि के आधार पे भक्ति को समझा जा सकता है। और 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो भक्ति का जो दौर चला उसने जो है वह एक स्वर्णिम दौर उसे कहा जा सकता है, जो जिसकी आवश्यकता आज भी है। और यह काफ़ी जिसे हम कहेंगे कि आत्मसात करने वाला विषय है। और इस प्रकार से हम जो है भक्ति को सकारात्मक और सही तरीके से एक सार्थक दृष्टिकोण के साथ देख सकते हैं। पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में है हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, अपशिष्ट प्रबंधक हैं या अपशिष्ट से जुड़ी हुई परामर्श सेवाएं, अनुसंधान या विकास कार्य करते हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्यक्रम की न्यूनतम योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण और इसे 6 महीने में पूरा किया जा सकता है, या अधिक से अधिक आप इसे 2 साल के अंतराल पर भी पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल है स्व शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन और विभिन्न माध्यमों से शिक्षण की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, चलिए समस्या का नहीं समाधान का हिस्सा बने। अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में दाखिला लें। हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें www.ignou.ac.in। धन्यवाद। Hello learners, welcome to this session. Today in this session, we will be talking about environmental quality and human health. This session is part of the course MEV 018, that is Environmental Health and Ecotoxicology of MSc Environmental Sciences program. So learners, let us see how does environmental conditions affect our health, what are the dimensions and determinants of human health, and how do they get influenced by the external and internal environmental conditions. Learners, first of all, let us understand what do we mean by environmental quality.
What does it contain? What does it comprise of? And how does it get affected? If we go into the definition, environmental quality is a set of properties and characteristics of the environment. Now, these characteristics may be either generalized or local as they impinge on human beings and other organisms. So, when we look into the details of this definition, which contains so many parts, a part of it says that it is a set of properties. It is a set of characteristics. And these characteristics vary from region to region. These characteristics are dependent upon various physical, chemical and meteorological factors, and most importantly, they may be generalized or local. So when we just simply discuss about environmental quality, that means it is a set of conditions. These conditions change over time, scale, pace and also region. What has been noticed in the times to come, that environmental quality has been under the influence of various physical, chemical processes which take place in the environment. More often so, these natural changes which have been occurring for a very long time have today been influenced by the anthropogenic factors. And the reason because of which we say that environmental quality is showing a sea change. The environmental quality is not like as it was before. So when we explore the environmental quality, whether it is at a macro level or micro level, we must also ascertain that it has a direct implication on communities, on individuals, and apart from it, various other species which are present in those conditions. So when we say environmental quality, we may also infer that it is just a condition of the environment. These are the conditions of the environment having the characteristics of physical, chemical and biological elements, and has a different impact on different species which are inhabiting that particular region or a particular habitat. Why it is interesting and what do we conclude by this is that, and therefore environmental quality may be favorable or unfavorable, that becomes a quite relative phenomena. Because for the bacteria which can thrive at a very high temperatures, yes, the low temperatures may be unfavorable conditions for them, and likewise those species which inhabited the cold environments, they may not find it suitable to survive in the regions which are characterized by high temperatures. So therefore, what is the common notion about environmental quality is that it can be a good quality environment or it can be a bad quality environment, that is totally dependent upon the characteristics of the living organisms, our adaptability, and how far we are successful in living according to the changed environmental conditions. Further, another aspect of this session is human health. So what we have understood by environmental quality is the conditions which are influencing us. But then what is human health? Most simple definition which has been given by WHO, that was long back in 1948. And what has been clearly marked here is that health or good health is not absence of diseases. And this we must understand, that health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. And in the recent years, there has been an addition to this statement where it has been said that also a healthy condition or a healthy individual will be the one who is able to lead a socially and economically productive life. Now, where we find individuals which are in a complete state of physical, mental and social well-being. Now this has much to do
with the external environmental conditions. And this is what we are going to study in today's session, that how the environmental conditions comprising of the various factors, how do they influence human health. Learners, we do not want any evidence. There is no dearth of evidence actually to support this statement if we say that our health, our individual health and also the community health is affected by the quality of the environment, is influenced by the quality of the environmental factors under which we are living. What are these factors, what are these dimensions, and how do they affect us is well known. We know how the diseases are grappling. We know that how that we are exposed to chemicals because of pollution and other things, and how far they have been affecting our health. This has also been understood. What is required today is that how we can protect ourselves and how we can catch hold of those environmental conditions which are affecting the global health of individuals. So, further going, what are the dimensions of the health? Because when we say it is a state of complete social mental well-being, but then there are certain factors which determine. Most commonly speaking, we say that it is the physical and the mental dimensions of the health of an individual. So, physical dimensions comprises of the most basic physical requirements of an individual, which pertain to good quality food, water, air that we are breathing, the type of housing that we have. These are the physical elements. So, the air which we are breathing, the water which we drink, the place where we live, these are all the physical elements which determine our health. They adversely affect our health when we say that the air is impure and we are exposed to contaminated water, when we are exposed to toxic harmful chemicals by way of when they enter into our body through various routes, or the type of the crowded communities or the crowded houses or the damp houses which are which have scanty sunlight, we can say, or which are not airy. So these are the physical dimensions of the health. Now they also disproportionately affect the individuals. At one end, the individuals which may be, for example, elderly people, the asthmatics people, the children, they are more exposed and they are more vulnerable to a certain set of environmental conditions, and therefore we find that a certain set of individuals become more ill in such conditions. Most of the focus of our health programs and most of our state of being healthy is directed towards ensuring that we have physical determinants in place, where we find that yes, we must have, the individuals must have access to good food and the quality of air and water. And we know the state of the affairs today, where millions of the people who are living in a water deprived conditions. But apart from it, what is gaining recognition and importance nowadays is the mental dimension of the health. More so, it is the state of balanced state of mind, and it also relates to our social, our mental and our emotional well-being. So we have two classes in a society where a section of the people are falling ill, or you can say they are not healthy because of the physical determinants missing. But more so, we also find in today's society that yes, there are certain sections of the people who, because of the mental related, emotional related issues, we may say that they are not healthy. So, for a person to be healthy, the physical and the mental dimensions must be in place. Now, what comes next to our mind is that how does environment come into this picture? How do we see and how do we may take the case where environmental factors are influencing the physical and the mental health. And of course, we may it may sound convincing that yes, the environmental factors may have an implication on the physical dimensions, where of course the food quality, air quality, water quality, that impacts the health of an individual. But this is also
established fact that environmental factors also influence the mental well-being of a person. So let us explore this more, where we are finding that environment and health are closely related. And I must say, there is no dearth of evidence to support this statement, because we very well know how the diseases are coming, how we are becoming more and more vulnerable to a range of bacteria and viruses, to chemicals, and so on and so forth. They are related, and good environment is an indication of good health of an individual's, wherein we find that where the standards of air quality and water quality are in place, we find that the individuals are healthy than their counterparts. And we have lot of examples which we have seen during the pandemic, that the cases of mortality has been higher in the regions where the air is polluted, or where the immunity of the people is low because of several persistent health related problems occurring. What has now happened today is that it is our serious concern that pollution and anthropogenic factors are adding and becoming the cause of worry, because of which we may say that we are becoming, we are exposed to different types of chemicals, different types of pollutants which are there into our environment. So environment and health are related, and we must also know that what are the environmental determinants of health. Although our health is physical and mental well-being, but there are certain environmental determinants. Now, what are these? Broadly, they are classified into physical, chemical, biological, and social environmental determinants. Now, physical environmental determinant is, for example, we know physical entities, for example, heat, light, temperature, humidity, spacing, housing. So these are the physical elements, and they also influence the health of the people. Now, we know that because of climate change related factors, why we are so much worried about the climate change phenomena, why the research is on where we are studying the impact of climate change on human health. Because increase in temperature, rise in temperature has an influence on the climatic parameters, and these parameters may be related to high temperatures happening at certain places, droughts and famines becoming more recurrent, or natural disasters occurring. These are the physical dimensions which not only affect the health of the people, especially the elderly and the infants, but also have an influence on other living conditions. And another thing is that the physical, chemical, social factors what we are dealing with, they do not occur in isolation. Basically, they are interrelated. So, there may be a case where a chemical which is entering into the ecosystem may lead to change in the physical attributes of the ecosystem. And different organisms, different individuals have different varying levels of, you can say, tolerance for different chemicals and different physical chemical factors. So, in view of this also, this is a case where the determinants of health affect the health of the people in adverse manner. Likewise, the chemical determinants of health. The chemical determinants are the toxins, the chemicals which are which find their way into the ecosystems, the rivers and the soils and the air, because of various anthropogenic activities in which we are indulged in. So these chemicals, and why there is a simple example is that why we are seeing increase in the rise of the cancers in the last few years, why it has become so common. Because of the different types of chemicals which enter into our body for a long period of time by way of food, by way of water, by way of different routes of exposure which are occurring. So, this is an example of the chemical environmental determinant of health. These may occur for a short duration in case of any accident happening, where we find a lot of cases where because of any obnoxious gas inhalation, there are cases of
respiratory problems occurring, but over a long period of time, these chemicals persistently, when they are there in the ecosystem, they get into our bodies through various routes, inhalation, ingestion, and other mechanisms. And because of the other phenomena that we may be discussing in some of the other sessions, biomagnification and bioaccumulation, they are there in our body, and therefore over a long period of time, then we find we ourselves are infected by different diseases. Likewise, classic example of the biological environmental determinants. You must be knowing about the different types of allergens which are there. These allergens cause respiratory problems. They may cause different types of infections to human beings. Then we also know why there is so much of incidence of bacterial diseases happening, viral diseases happening, why the strains of the virus and bacteria are becoming more severe than ever before. Because of these, they are the biological factors which have entered into our ecosystems and in our nearby environments. Then there are social environmental determinants. Now, not only our health is influenced by the environmental factors, but the social level, the illiteracy, the status of the public health programs, the level of awareness, the disease control mechanisms. So there are different, the income level of the people, the literacy of the people, the status of women in the society. Now these are some of the social factors which influence the community health and the individual health, which must be more researched, and which we must invest on the social factors also to see that healthy individuals are being brought. So these are some of the common factors which influence. Now, when you further explore the physical, chemical, biological and the social factors over a period of time, then we notice that because of anthropogenic factors and because of so many types of artificial elements, the four factors which you just saw on the screen, they are altered. They are becoming more severe. There are new entrants in these different heads, and these are posing health threats to the people. So within during the course of time, what we say that the life expectancy has increased. People are living longer, but we are not so sure about the quality of the life of the people. So because of different medical interventions, because of so many types of treatment possibles, the innovations which have been done, we are able to conquer many of the diseases and we are living longer. But still, the quality of the life has been affected, that has been compromised because of n number of factors which are responsible for it. So these are some of the simple examples which you can see on the screen. We are very well aware of these facts, that how climate change is, all the environmental problems or things which are going on in present are posing threat to the environment. So simple phenomena like water pollution, climate change, population increase, biodiversity loss, waste generation, all these you will find that has an implication on the health of the people, whether it is the individual health, community health, global health. Because urban growth is taking place, ecosystems have been damaged, there has been increase in the level of the greenhouse gases, the soil properties, the water properties have changed. We know that how water stressed we are at present and what is the state of the affairs which is predicted for the years to come. We know the state of the food which we are eating. We know that there are chemicals there in the food is adulterated, and there is entirely a different topic of discussion where we can go on discussing that how the food which we are eating is impure, contaminated, and how it is life-threatening in the years to come. So therefore,
there is a term called environmental burden of diseases, and you must know, when you talk about environmental quality and human health, the EBD concept, that is the environmental burden of disease, which was earlier introduced first of all by the World Health Organization, and it gives us an idea that what are the risk factors in the environment, and in what way do these factors influence the health of the population in a comprehensive and comparable way. And it also, on a broad level, it explains the proportion of ill health attributed because of the exposure to bad environmental factors. So in the last few decades, it has been seen that the environmental burden of diseases is increasing. If we go on explaining this in a very small and very simple concept, is that the diseases which are outbreaking and which are happening to the population, there is an environmental burden to it. And when we say environmental burden to it, that means it is because of the changed environmental conditions which have taken place. There may be change in the air quality, water quality, soil quality, the type of food which we are eating, as we discussed, the type of housing in which we live in. That is the environmental burden of the diseases. And therefore, there are terms like quality adjusted life years. You must know, learners, about this thing, this concept, that what is disability adjusted life years and what is quality adjusted life year. So quality adjusted life year simply explains that how, because of the improvements in the environmental conditions, what addition has been there in the, what value addition, I must say, in the quality and quantity of the disease which has been lived. So, good health is also important for economic growth. This is very important for us to understand, that it is not just an individual loss, the number of sick days which a person has, but overall, if we calculate, it has an economic consequence, it has an economic repercussion. So quality adjusted life years means if we invest towards improvement in the environmental conditions, if we invest towards improving the health status of the people, that good quality, how much it is reflected in the economic growth of an individual. And likewise, there is a term called disability adjusted life year. And disability adjusted life year means we are prone to diseases. There is a, for example, there is a disability. The number of days in a month when we fall sick, how much loss does it occur overall on the economic growth of a country and also on the productivity of an individual. So this is very obvious that if we fall sick too often, if there is a kind of a disease, if there is a kind of an accident, or if there is a premature death because of environment related factors, then it explains that how much of the number of years that has been wasted. Now this also was developed in 1990s, and it is a way of comparing how do we compare the health and expectancy across the countries, across the world. And learners, we must also remember one thing, that we have talked at length about the factors which are there in the external environment, but indoor environmental quality also has a big role in health of the individual. So in today's session, we have seen that what is environmental quality, what does it mean, and how it relates to health of the people. Thank you so much. Dear learners, welcome to Ignou. You're going to lead with a difference. So how do you lead with the difference? The unique attributes
of the university system through which you're going to go for the management program or any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode. So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It provides continuous evaluation to enhance the skills of the learners through assignments, and it provides the opportunity for the learners to appear for the exams twice a year through term-end examination system. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of diploma in management. Till date, it has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. The school has international presence as well, as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration which Ignou is offering? First of all, it revitalizes and accelerates the pace of your professional development. And how can it do it? Through this program, which is one of its kind and it has been built through the insights and knowledge of faculty and experts. The content aids in new ways of thinking. It provides exciting new opportunities, new approaches of learning. It has contemporary courses ranging from business communications to human resource management, marketing management, financial management, operations management, all sorts of courses which are required in the present times for the industry, and as per the demands of the industry, all the courses have been included in this particular program. It is a uniquely designed program for both the fresh graduates as well as the working professionals, and it is offered pan-India and also in select countries internationally. Let us see the program at a glance. The program name is MBA, and the eligibility criteria for this program is bachelor's degree, minimum of 3 years duration with at least 50% marks and 45% marks in case of the reserved category. The duration of the program is minimum 2 years and maximum 4 years, and the program fee per semester is 15,500. The structure of the program, the total credits of the program, the total credits are 116 because there is one project course which is equivalent to 2 courses. So it comes out to be 29 courses. Otherwise, technically it is 28 courses. So there are core courses, there are specializations, and there is one project work. So when we talk about the first semester, there are 7 core courses. In the second semester, we have again 7 courses. From the third semester, the specialization starts. In the third semester, you have 2 core courses, 4 specialization courses, and 1 course of project work which is equivalent to 2 courses. In the fourth semester, there are 4 core courses and 3 specialization courses. So whatever the specialization area the student takes or chooses, that particular specialization MBA is offered to the student. If a student wants to exit the program after completion of the specified courses available in the first and second semesters, that is 56 credits if the student completes, then there is an exit option available. The award of postgraduate diploma in management on the request of the student if the student wants to exit. Apart from this, there are 4 stand-alone PG diplomas also, which are a different part. They don't
Namaskar friends, I welcome you all in this class of mathematics. So, today we are going to discuss principles of counting. This is very important chapter of mathematics for you, and it is used very widely in all almost all branches or disciplines because permutations, combinations and all sorts of groupings come under this chapter, principles of counting. How do you count? So, let us start. There are two fundamental principles of counting. Number one is fundamental principle of multiplication. We call it in short FPM. What is this? Friends, suppose you have to complete n number of jobs. So, suppose the first job, n jobs are to be completed. So, how many ways these n jobs can be completed? Suppose that first job can be completed in m1 number of distinct ways. Distinct way means that different ways. No one is common. There are m1 number of different types of ways you can complete this first job, and each one is independent. Now, the second job similarly can be completed in m2 distinct ways. Now, you can go on writing third job m3 distinct ways, and the nth job, total n job are there. So, nth job can be done in mn
distinct ways. So, in total, if a question is there that in how many ways these n jobs can be completed. So, this fundamental principle says that this n jobs can be completed in M1 multiplied by M2 multiplied by M3, M4 till Mn. So, this is the first fundamental principle of multiplication, that if there are n number of jobs and each job is being completed in different number of ways, distinct ways, not common ways, then we take multiplication of all the distinct ways, and this will give the total number of ways in which these n jobs can be completed. Okay. So, let us take an example. Suppose you go to a shop to buy a pen and a pencil, and you ask the shopkeeper to show you the pens, and he shows say pen, 10 types of distinct matlab they are not similar, distinct pens. You choose one of them, then you ask for a pencil, and he shows you 15 types of distinct pencils. So, according to fundamental principles, how many ways you can select a pen? Out of 10 types, you will select only one pen, but your options are 10. So, you can select in 10 number of ways the pen, and again you have to select a pencil also, that you can select in 15 different types, distinct types are there. So, 15 number of ways. So, if we have to select a pen and a pencil, so then the total number of ways in which you can select a pen and a pencil will be 15 into 10, that is 150 ways. So, you see 150 options, which seems to be very simple, because you have gone to a shop and you have chosen one pen out of 10 distinct pens, and you have chosen one pencil out of 15 distinct pencils, but you know you have total options of 150 ways. Out of that, you have selected one pen and one pencil. So, this is the type of use. You can see that though it may not take much time, because out of 10 you selected one, and then out of 15 you selected one, but the total number of options were 150. So, out of 150 you have selected two things. Now, let us come to the second
fundamental principle of counting. So, this is the fundamental principle of addition. This was multiplication where you there are n jobs to be completed and each job were done in different number of distinct ways. So, it was simply the multiplication of all M1, M2, Mn gave the total number of ways you can accomplish the n jobs. Now, suppose the second one is fundamental principle of addition. This we call FPA. Suppose there are one job is to be completed out of n jobs. There are n number of jobs out of which one job is to be completed, any one. So, suppose the first job can be done in M1 number of distinct ways. Second job can be accomplished in M2. These are the alternatives. Okay. M1 number, but all distinct, not the same. M2 number of distinct ways. Nth job can be done in Mn number of distinct ways. So, what does this fundamental principle of addition says? That the total number of ways in which one job is to be done out of these n jobs will be equal to M1 plus M2. This will be addition, plus M3 till Mn. You just add all the distinct ways in which the n jobs can be done and one job is to be completed, then its sum will be. So, this is the fundamental principle of addition. So, there are two principles of fundamental principles of counting. One is the fundamental principle of multiplication FPM and the other one is
fundamental principle of addition, FPA. Now, let us take an example of FPA. We have seen example of FPA. Now, again take the same example. Suppose you have gone to a shop and you have to select this time you want to buy either a pen or a pencil, okay? Either a pen or a pencil. So, options are, the shopkeeper has shown you 15 distinct type of pencil, and 10 distinct types of pens. So, out of these you have to select one, either a pen or a pencil. You are just going to buy one thing out of these 25 options. So, this will be equal to 15 plus 10 is equal to 25. This is quite simple to understand. You have 15 types of pen, okay, and 15 types of pencils and 10 types of pen. So, there are 15 options here, 10 options here. So, total 25 options. You can choose either one of the 25. So, there are 25 options. So, you can choose 25 number of ways. But you see, you can see that in choosing there is a huge difference. There you had 150 options when you choose one pencil and one pen, and here it was only 25 options. So, it is difficult to comprehend. I will take another example which will explain you that how these things, though you might have learnt it in your school also. If you have taken mathematics at +2, this might be there, but don't worry, it is quite simple concept. Suppose 5 letters are there, A, B, C, D and E, and again 5 numerals are also there, 1, 2, 3, 4, 5. So, if suppose let us say a simple password is to be made, either you can write a letter, choose a letter or a numeral, one thing. So, how many options do you have? You can choose any of the letters from here. So, 5 options are there, and then you can choose any one of the numerals from here. So, 5 options are here. So, you have to choose one option. So, FPA says fundamental principle of addition, that the total number of options you have or total number of ways you can select is 5 plus 5 is equal to 10. So, it is quite understandable that
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, out of these 10 options, you have to choose one options, those there are 10 number of options. Suppose it is said that choose one letter and then one numeral. So, such that A1 or B2 or A3 like this. So, then what will you do? You have 5 options here. You will have to use fundamental principle of multiplications. You have 5 options to choose a letter and then 5 options to choose a numeral. So, it will become 5 into 5. So, it will become 25. So, here it was only 10 options, here the options has increased to 25, which you can see that options will be A1, A2, A3, A4, A5 again, B1, B2, B5 and similarly E1, E2 and E5. So, 5 into 5 this will constitute the 25 options you have, whereas here you had only 10 options. So, you can see that in fundamental principle of addition, you have you just sum up the things, and let us take another example. In fundamental principle of multiplication, you multiply the things, so the options becomes manifold. Suppose there is a class of students in which 35 girls are there and 40 boys are there. Now, suppose that event has to be done in which one girl and one boy has to be selected from the class. So, how many number of ways this can be done? One girl can be chosen out of 35 girls in 35 number of ways. You can choose any one girl, and one boy out of 40 boys you can choose 40 number of ways. So, if you have to choose one boy and one girl, fundamental principle of multiplication says that it will be 35 into 40 and this will be equal to 1400. So, suppose another event is there in which only one student is to be sent, either girl or boy. So, one girl can be chosen in 35 number of ways,
one boy can be chosen in 40 number of ways. Any one of the student is to be chosen. So, the total number will be equal to 35 plus 40 is equal to 75. So, you see the difference. If a boy and a girl is to be chosen, number of ways is 1400, and one student out of these, there are 75 options, 75 number of ways. Now, before going into the permutation and combination, I will tell you something about factorial. Factorial notation and its calculations. Factorials. So, the multiplication of first n natural numbers, that is sorry, multiplication of first n natural numbers. We represent it, call it factorial n. It is also denoted like this also, which is 1 into 2 into 3 into 4 till n. Okay. So, this is denoted by factorial n. So, let us write it in the reverse order. It is written n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, 3, 2, 1. So, this means that we can also write it as n into factorial n minus 1. You see, because this is n minus 1, n minus 2, n minus 3, according to this definition, this will become factorial n minus 1. We can also write it as n into n minus 1 into factorial n minus 2, because the rest of the brackets from here n minus 2 to 1, this will be equal to factorial n minus 2, and so on. We can go on writing n into n minus 1 into n minus 2 into factorial n minus 3. You see,
this is a very useful notations, and it will be used widely in this method of counting, which will come in later class, permutations and combinations. Let us take some examples of permutation of factorial. So, the example of according to the definition, factorial 0, we define it as is equal to 1. So, if somewhere factorial 0 is coming, it will defined as 1. Factorial 1 will also be equal to 1. Factorial 2 is equal to 2 into 1 is equal to 2. Factorial 3 is equal to 3 into 2 into 1, which will be equal to 6. Factorial 4, similarly you can go on. 4 into 3 into 2 into 1, which is equal to 24. Factorial 5, you can write it elaborately, or you can write 5 into factorial 4. So, this will be equal to 5 into 24, and this will be equal to 720. Okay. Now, let us take few more examples on factorial. It is very simple. Suppose in somewhere comes factorial 4 into factorial 3, it is very simple. It would write this will become 4 into 3 into 2 into 1 multiplied by factorial 3, 3 into 2 into 1, simple multiplication. So, 24 into 6 will come 144. Now, simple calculation. Suppose comes out to be factorial 10 divided by factorial 8 into factorial 3. So, this will be equal to, we can write 10 into 9, and again it will go into 8 into 7, but I will write factorial 8 here because in the denominator factorial 8 is there. So, it will be cancelled out, divided by factorial 8 into factorial 3. So, this factorial 8 will be cancelled out by this one, and this will be equal to 10 into 9 divided by factorial 3, that is 3 into 2 into 1. So,
this will be cancel out 3 and then 5. So, this will be equal to 15. So, this is very simple calculation. I have just explained so that there should not be any confusion. Just as we do the calculations of other things in factorial also, we should remember the definition of the factorial, and then we can expand the factorial, we can write the factorial in other factorial terms, and we can cancel out also it if the in the nominator and denominator the same factorial is coming, we can cancel it out. So, similarly, the summation and difference of the factorial, say factorial 5 minus factorial 4. So, simple, you can do it anyway. 5 factorial 4 minus factorial 4, and you take factorial 4 common. So, it will be equal to 5 minus 1. So, it will be 4 into factorial 4, which will be equal to 4 into 4 into 3 into 2 into 1. So, this is equal to 96. Yes. Again, suppose another example. We have a number in multiplication that is equal to 6 to 12. 6 into 7 into 8 into 9 into 10 into 11 into 12. So, we can write it starting from 1 to 5, we multiply in the denominator also and denominator also. So, this will be equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5, and then we will continue here into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, and then in denominator also we will write 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So, what essentially we have done, that we have multiplied 1 into 2 into 3 into 4 into 5 in the denominator, in the numerator and denominator. So, the result will be same. So, this will become, the numerator will become factor 12, because from 1 to 12, and this will become factor 5, factorial 5, sorry, factorial 12 and factorial 5. So, this multiplication we can represent in this factorial form. Okay. Suppose another example is there.
3 into 6 into 9 into 12 into 15 into 18 into 21. So, this can be written, you see you take 3 everywhere coming repeatedly. So, 3 into 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 3 to the power 7 we have taken out, and then within bracket it will be 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. Why we are doing so? Because I can see this is the, these are the multiples of 3. So, we have taken 3 outside, so that within this we will get factorial 7. So, just to write in the form of factorial, I have used this. So, anything written similarly in the form of 2n into 4n into 6n into 8n. Again here we can take 2n is everywhere 1, 2, 3, 4, 5. 5 multiply 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So, this will be 2n to the power 5 multiplied by factorial 5. Suppose one more similar example. Problem is that this multiplication is there now. How to represent it in the factorial? So, we can write it from 1 to 8 we can multiply in nominator. So, we can write factorial 8, then comes 9, then I multiply it here by 10. In denominator also I will multiply. So, here also factorial 8 I have taken, and then into 10. Here 11 will come, but 12 is not there. So, I will multiply it by 12, and here 12 will come. Again 13 is there, but 14 is not there. So, I will multiply here in the denominator by 14. So, in the denominator also I will multiply with 14. Again 15 is there, but 16 is not there. So, I will multiply by 16 in both denominator and denominator, and then 17 is there, but 18 is not there. So, then again I will multiply at both places. Then 19 is there, 20 is not there. So, I will multiply here by 20,
both places, and then 21 is already here. So, now this will become, after factorial 8, 9, 10, 11 till 21 is there. So, in the denominator it will, this complete thing will become factorial 21, and in the denominator it is factorial 8, and then I will take 2 from each one. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, it will be 2 to the power 6 into, then it will become sorry, yeah. So, it will become 5, it will become 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. But 1 to 4 is missing. So, I will multiply here by 4, in the denominator also I will multiply by 4, and then it will be 1 into 2, sorry, not 1 into 2, it starts from 5, 5 into 6, because 2 I have taken out, 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. So, this will be equal to factorial 21 multiplied by factorial 4 divided by 2 to the power 6 into factorial 8 into, this will be factorial 10, because till factorial 4 is here, then 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10. So, this will become factorial 10. So, this multiplication in the factorial terms, it comes out to be this. Now, suppose you have to solve a problem where it is given that factorial n plus 2 is equal to 30 multiplied by factorial n. How will you solve it? So, this we can write n plus 2 into n plus 1 and again n. So, it will we can write factorial n is equal to 30 factorial n. Factorial coming both sides, so we can cancel it out. So, and then we can expand it. So, it will become n square plus 2n plus n plus 3n plus 2 is equal to 30, which will be equal to n square plus 3n, and this 30 comes this twice. So, this will become minus 28 is equal to 0. So, it is simply factorization we will do. So, this will become n square plus 7n minus 4n minus 28 is equal to 0, and this will give n outside n plus 7
minus, if I take 4, n plus n will, this is equal to 0, and then this equation becomes n plus 7 I take common. So, it will be n minus 4 is equal to 0. So, the sum of these two factors are 0. So, either n will be equal to minus 7 or n is equal to 4. N is equal to minus 7 or n is equal to 4. Since n is the element of natural numbers, so n minus 7 is not possible. So, the value of n will be this one, n is equal to 4. So, this is how you can solve the problems based on factorials. I will take one more quick example. Suppose it is given that factorial n minus 2 is equal to 12 multiplied by factorial n minus 4. So, how will you solve it? It will become n minus 2 into n minus 3, again n minus 4 till 1. So, we write it factorial n minus 4, because n minus 4 is here also. So, this will cancel out, will be equal to 12 n minus 4, and factorial n minus 4 both sides in multiplication. So, it will cancel it out. So, this will become n square minus 3n minus 2n. So, it will become minus 5n plus 6 is equal to 12. So, this will be n square minus 5n, and this will become minus 6 is equal to 0. So, again if you solve it, so this is 6. So, we can write it n square, simple factorization, minus 6n plus n. So, this will come minus 5n, minus 6 is equal to 0. This will give, take n common here, n minus 6 plus 1, n minus 6 is equal to 0. So, n minus 6 take common here, n plus 1. Since these two factors coming out to be 0, so either this will be 0 or this will be 0. So, n is equal to 6 if this is equal to 0, or n is equal to minus 1. This is not possible because n is an element of natural number. So, n is equal to 6 we will take. So, this is possible. So, the value of n will come out to be 6. So, that is how you can solve the problems based on factorials, and this will be used in your permutation and combination problems which
we are going to learn in the next classes. Okay. So, friends, today we have covered the fundamental principles of counting, that is fundamental principle of multiplication and fundamental principle of addition, in which if you have to do n jobs and each job can be done in distinct number of ways. So, FPM, that is fundamental principle of multiplication, says that all the n jobs can be done in succession in M1, M2 till Mn. If you multiply all the number of possible ways for each job, then it will give the total number of ways in which we can solve the problem. The fundamental principle of addition says that if one job is to be done out of n jobs, then and if each job is being done in M1, M2 till Mn number of distinct ways, then the total number of ways in which 1 out of n jobs can be done is equal to M1 plus M2 plus M3 summation of all the ways. So, this will give the fundamental principle of addition, in which you add the number of ways of all the options. Thank you.